Hello students, the question is assertion. The temperature coefficient of resistance is positive for metals and negative for p-type semiconductors. Reason: the charge carriers in metals are negatively charged, whereas the majority charge carriers in p-type semiconductors are positively charged. So the problem is based on the assertion reason and in particular the topic semiconductor electronics. So the problem is based on the concept of the temperature coefficient of resistance. Now, to understand this assertion reasoning based problem, we have to understand the concept of the temperature coefficient of resistance, when it is positive, when it is negative. So, the temperature coefficient of resistance denoted by alpha, if it is positive, it means that the resistance increases when temperature increases. And the temperature coefficient of resistance is negative when if the temperature increases then the resistance decreases. In terms of conductivity also we can explain that as the temperature increases and the temperature coefficient is positive, then the conductivity decreases, and for the materials having negative temperature coefficient of resistance, when the temperature increases the conductivity goes up. So we know that for metals the temperature coefficient of resistance, the temperature coefficient of resistance alpha is positive. And for semiconductors, and for semiconductors, whether the semiconductor is of p type or the semiconductor is of n type, for the semiconductors alpha is, or the temperature coefficient of resistance is negative. It means that as the temperature increase, the resistance of the semiconductors goes down, whether they are p type or n type, it doesn't matter. So the first statement, that the temperature coefficient of resistance is positive for metals, it is true, and for the p type semiconductor it is negative, it is also true, because for any type of semiconductor it is negative. So this statement is correct. Now we can explain from the, we can give the physical explanation also why the temperature coefficient of resistance is positive for metals. Basically metals, they consist of certain ions, and the mainly the charge carriers are the free electrons which are in bulk amount. They have the free electrons, the metals. So when the temperature increases, the vibration of the ions increases, and when the vibration of ion increases, the path of the electrons is obstructed. So the movement is obstructed. So that's why the resistance increases. The main reason is this: as the temperature increase for the metals, for the metals, as the temperature increase, the ionic vibration increases, and it stops or hinders or obstructs the path of the electrons, movement of electrons. That's why a reduction in current, it means that increase in resistance. Whereas for the semiconductors, for example, we have a semiconductor, we have a p-type semiconductor, aluminum is at the center, and surrounding there are silicon atoms. So aluminum is having 3 electron in the outer shell. So these 3 electron, they form the covalent bond with the silicon surrounding it, and one is the vacancy here, which is known as the hole, and they are predominant here. So when the temperature increases, the covalent bond breaks, and there is a generation or the liberation of the charge carriers. So in the case of p-type, the charge carriers are holes, whereas in the n-type, the charge carriers are electrons. But in both the cases, the covalent bond gets broken, and we get the charge carrier in the movement form. So in this way, this effect is predominant. This effect is predominant here in the case of semiconductor. So when temperature increases, the charge carrier, the majority charge carrier, they become free state and they can move easily, and that's why the resistance goes down as the temperature increases. So the first statement is totally true. The second statement is this: the charge carriers in metals are, the reason statement is this: the charge carriers in metals are negatively charged. It is true that there are free electrons in the metals,
which are negatively charged. That's the true thing. Whereas the majority charge carriers in p-type semiconductor are positively charged. This is also true that in the case of p-type semiconductors, the majority charge carrier are holes. So this is also a true fact. But this true fact does not explain the assertion. The assertion is in this explanation which I have given to you, that when the temperature increases, the ionic vibration increases. That's why there is a obstruction of path of the free electrons. That's why there is increase in resistance in the case of the metals. Whereas for the semiconductor, covalent bond gets broken and there is a generation of charges, there is a liberation of charges, and they become in free state when the temperature increases and the resistance goes down, or in other words, we can say that the temperature coefficient of resistance is negative for the semiconductor. So this is the correct explanation. This is the correct reason here. But the reason given does not explain. It is not connected in any way with the assertion. So we can say that both the assertion as well as reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. In these situations, we choose the option B. Generally, in the assertion reasoning type problems, option B corresponds to the situation when the assertion as well as the reason both are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. So option B is correct here. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से ली गई है, ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें असर्शन में कहा गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, नेगेटिव होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कहते हैं एक ऐसी वैल्यू जो कि बताती है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, और कितनी क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगी, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना ही इफेक्ट ये ज़्यादा होगा। टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस का बढ़ना उतना ज़्यादा होगा। या टेम्परेचर, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इस केस में हम कहेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटती है। तो मेटल्स के केस में देखा जाता है कि अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है। उसका रीज़न है कि टेम्परेचर के बढ़ने पे आयंस जो कि बल्कियर होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, वो वाइब्रेशन उनका बढ़ जाता है, और उनका वाइब्रेशन मीन पोजीशन के अबाउट जो बढ़ जाता है, उससे ये चार्ज कैरियर्स के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और अगर चार्ज कैरियर्स का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फ्रीली वो एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर का स्टेट ऑफ एक इफेक्ट पड़ता है मेटल्स के ऊपर कि रेजिस्टेंस जो है उनकी बढ़ जाती है, और जनरली काफ़ी हद तक ये लीनियर मैनर में बढ़ती है। जबकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटती है, तो इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। लेकिन यहाँ पे लीनियर मैनर में नहीं, नॉन लीनियर मैनर में ये चेंज होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि नेगेटिव होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, और मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। दूसरा जो रीजन दिया गया है वो जस्ट केवल एक फैक्ट बताया गया है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि उसमें कहा गया है कि चार्ज कैरियर्स मेटल में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं पी टाइप में वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसका कोई भी लिंक नहीं है असर्शन से, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव क्यों होता है मेटल्स के लिए या नेगेटिव क्यों होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। जस्ट केवल एक फैक्ट बताया गया है। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स में अगर असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम ऑप्शन बी चूज करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।